नाउ लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक वॉर। यूएस ने रशिया पे दुनिया भर के सैंक्शंस डाले, करेक्ट? क्या फायदा हो रहा है? फायदा क्या हो रहा है? रशियन रूबल बिफोर प्यूटिन स्टार्टेड मिलिट्री ऑफेंसिव इन यूक्रेन, रशियन रूबल का रेट था फॉर $1 अराउंड 82 रूबल्स, फॉर $1 82 रूबल्स। बाद में जब ये ऑफेंसिव शुरू हुआ, यूएस एंड ईयू ने सैंक्शंस डालने शुरू कर दिए, तो इनिशियल जो नीजक रिएक्शंस होते हैं, वो नीजक रिएक्शन के हिसाब से रूबल का भाव गिरने लगा एंड इट वेंट अप टू 125, 82 से 125 रूबल्स फॉर $1। पीपल थॉट दैट नाउ रशिया इज फिनिश्ड। आज $1 is equal to 78 rubles. That means ruble value has appreciated than pre-war level. They say war. That's why I'm using the word pre-war. So pre-military offensive level जो आपके रूबल्स का भाव था, आज उसका appreciation हुआ है rather than depreciation. How is it possible? The world wants to believe you that Putin is screwed. Russian economy is screwed. The sanctions are killing Russia. Am I right? The world wants you to believe that. Then in that case, how is it possible that it has been, the currency is appreciating? करेक्ट? तो उसके पीछे बहुत कुछ हुआ है। बाइडेन भाई साहब ने क्या किया? पहली चीज सैंक्शन। अभी यूएस को सैंक्शन खेलने में बहुत मजा आती है, लेकिन जरा सोचना चाहिए आप खेल किसके साथ रहे हो। You are playing with that President Putin. He is used to these particular sanctions right from 2014. और 8 साल हाथ पे हाथ धरे बैठने के लिए प्रेसिडेंट प्यूटिन मतलब कोई इमरान खान नियाजी नहीं है कि मालूम है प्रॉब्लम्स क्या होने वाले हैं, लेकिन फिर भी भैया हम अपनी दुनिया में मस्त है। नहीं, he had already started building up the technology, he had already started building up the techniques. Now what kind of techniques? आप जरा सोचिए, सबसे पहले सैंक्शन में क्या किया यूएस ने? रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला। व्हाट इज स्विफ्ट सिस्टम? थोड़ी सी आपको आइडिया रहेगी। इट इज नथिंग एल्स बट बेसिकली जैसे अपने आरबीआई का क्लियरेंस होता है, वैसे ही आपका इंटरनेशनल बॉर्डर्स में यूएसडी ट्रांजैक्शन में क्लियरेंस होता है। सो इफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम से रशिया इज रिमूव्ड, करेक्ट, सो दैट मींस रशिया कैन नॉट एक्सेप्ट द पेमेंट्स इन डॉलर्स, रशिया कैन नॉट पे द पेमेंट्स इन डॉलर्स, करेक्ट। तो रशिया को क्या फर्क पड़ा? आपकी जानकारी के लिए, रशिया ने ऑल्टरनेट टू स्विफ्ट ऑलरेडी बना के रखा था, दैट इज एसपीएफएस। आपकी जानकारी के लिए चाइना ने भी बना के रखा है सीआईपीएस। और शुक्र मानिए भगवान का कि 2014 में वी ऑल्सो गॉट सम विजनरी लीडर कि जिन्होंने आते आते ये सिस्टम पे काम करना शुरू किया एंड नाउ भारत हैज ऑल्सो मेड एसएफएमएस सिस्टम। चाइना का सीआईपीएस, रशिया का एसपीएफएस, भारत का एसएफएमएस, ये 3 सिस्टम्स स्विफ्ट की तरह ही काम करते हैं एंड नॉट नेसेसरली दे हैव टू डील इन डॉलर्स। और ये सिस्टम का फायदा लेके नाउ प्रेसिडेंट पुतिन स्टार्टेड डिफरेंट बायलैटरल डील्स। भारत को ऑफर दी होगी, आपने सबने सुना होगा, भारत को ऑफर है रशियन ऑयल, गैस, हम लोग गैस तो वहां से लेते नहीं, रशियन ऑयल, रूपी रूबल एग्रीमेंट। भारत के लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। हु इज बाईपास्ड? यूएस डॉलर, करेक्ट। चाइना के साथ रशिया का डील चालू हुआ है, युआन रूबल्स। चाइना के लिए भी अच्छा है, रशिया के लिए भी अच्छा है। हु इज बाईपास्ड? यूएस डॉलर, करेक्ट। मेक्सिको doesn't have any problem in paying in rubles. Some of the EU countries who are facing tremendous energy crisis, now they have also started saying we don't mind paying in rubles. Who is bypassed? US dollar. Turkey, it has already got agreement with Russia, lira rubles. Who is bypassed? US dollar. Now the things have gone to that extent that even Saudi has started talking about the terms with China that they will establish yuan system, yuan and dirham system.
So that means Saudi is now on the verge of signing an agreement with China that it is ready to accept yuans in return of oil for the as payment of oil. So again, who is bypassed? US dollar. आपने सुना है US dollar is a global reserve currency. Why is it global reserve currency? Just think of that, because maximum trade of the world happens in US dollar. And now let me ask you one question, which is the most traded commodity in the world? The most traded commodity in the world is oil. And oil payments are compulsorily made in US dollars, and that is why USD is the global reserve currency. And now, taking advantage of this particular conflict, taking advantage of the sanctions, if now President Putin has started bypassing US dollar, you can imagine whose fall has started. It's not the fall of Russia which has started, it's the fall of US dollar which has started. And losing the status of global reserve currency is going to be a nightmare for that particular country, for US. You know why? Because since USD is a reserve global currency, US can print indiscriminate currency whenever they want currency for distribution. अगर रिसेशन आता है तो रिसेशन से निकलने के लिए डिमांड बढ़ानी है, डिमांड बढ़ाने के लिए लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाना है, छापो यूएसडी. They can indiscriminately print because that's a global reserve currency. लेकिन हमें अगर सपोज भारत में अगर पैसा डालना है तो गवर्नमेंट कैन नॉट इनडिस्क्रिमिनेटली प्रिंट रूपी. व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी. उससे अपना डिवैल्यूएशन होगा, बट यूएसडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वन यूएसडी के हिसाब से बाकी रेट डिसाइड होते. एंड इफ धीरे धीरे करके starting with this particular conflict, starting with this particular action of Putin, which is supported by many countries, if USD loses the global reserve currency status, their economy will collapse. It will literally collapse because inflation will reach to next level. एक सिंपल सी बात देता हूं, सिंपल सा एग्जांपल. मैंने आपसे 1 लाख रुपया लोन लिया, ठीक है, मुझे रीपे करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं 1 लाख रुपया प्रिंट करता हूं और आपको देता हूं, मेरा ऑब्लिगेशन कंप्लीट है. ओके, उस 1 लाख पे मुझे 10,000 इंटरेस्ट देना है, मेरे पास पैसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 10,000 रुपीज प्रिंट करता हूं, आपको देता हूं. तो नाउ यू टेल मी, इफ दिस इज पॉसिबल, इफ दिस इज हैपनिंग, दैट लोन एंड दैट इंटरेस्ट, इज इट चीप फॉर मी और इट इज कॉस्टली फॉर मी? It's very cheap. Am I right? And this is what US has been doing. Whenever they have to meet any obligations, they can just print currency and pay it. But if it loses the global reserve currency status, will they be able to do that? And if no, in that case, the loans and the interest is going to become so costly that it is going to take inflation to the next level. Already, US is facing inflation to the extent of 8%. Correct? The country which is proud of keeping inflation always around 2% is right now facing 8% inflation. Now just bypass USD and then see to what level that inflation goes. Economic war is already on. Secondly, in latest move, President Putin has connected gold with rubles. He has given permission to Russian central bank to buy gold, and the rate has been fixed, that is for 5,000 rubles 1 gram gold. So now get ready, as long as what I can see, get ready to get the next news, and which will be a nightmare for US. That is, Russia can start asking payment for its resources like oil, gas and other minerals in gold. That means gold connected with rubles. So either you pay me in rubles, you don't have rubles, okay, give me gold. So you can imagine what will happen to US in that case, because rubles will be supported fully by gold and US dollar is not supported by gold
or not even any securities. So देखा जाए तो there is no much difference between cryptocurrency and US dollar. क्रिप्टो करेंसी को भी कोई बैकिंग नहीं है, यूएस डॉलर को भी कोई बैकिंग नहीं है. फर्क सिर्फ इतना है, यूएस डॉलर आप देख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी वर्चुअल करेंसी है. Are you getting it? And in that case, what will happen to US dollar further and US economy further? You can imagine that. This is the economic war, which is actually Putin winning in spite of so many sanctions.